Dear students, welcome to this class of mine. Today I will explain to you how to write a good letter for placing an order of some goods or items. Imagine you are the head of a sports club. Zonal cricket matches are coming near, and your team will also be participating in these zonal cricket matches. So you require some sports items for this participation. You decide to write a letter to a company manufacturing sports items. So how you will start writing such a letter? This letter is official in nature, so you will have to follow the format of a formal letter. That is self-address or sender's address in 2 lines, leave 1 line blank, then put date, again 1 line blank, the receiver's designation and the address, then leave 1 line blank, write subject, always begin the subject with a noun, then leave 1 line blank, put salutation. Then you will start writing the body of the letter. You will divide the body of this letter into 3 paragraphs. In the first para, you will tell the goods you require. This will be introductory in nature. Then the second para, main body, and the third para, making a request to send these goods within a stipulated period of time. Then when the letter is complete, then you leave 1 line blank and take polite leave taking, like yours sincerely or truly. You can use one of these two, either sincerely or truly, then signature and name. So at the time of writing such a letter, there are certain points which you have to keep in your mind. I will tell you those important points. Divide the body of letter into 3 paragraphs. First para, introductory in nature. Approval of the rates sent by the party, by the manufacturing company. Place the order of the goods or items you require. You will write this much in your opening para, introductory para. Second para, first para, when you name the items, so you will make a box, serial number, name of item, brand, quantity. So you will make box with 4 columns. First में serial number, second में name of item, third में brand, fourth में quantity. Then second para, main body of the letter, make clear to the sender of the goods that nothing below the mentioned specifications will be acceptable. This is very important, right? The third para, make request for delivery of goods within the stipulated time, right? These things are very important to mention in that letter. Then write clear and articulate language, articulate well-connected sentences
using a good vocabulary. Then the last point, maintain a grammatical clarity and follow correct punctuation. So these are the important points you will have to keep in your mind at the time of writing such a letter. And always keep this thing in your mind, letter writing is an art. Every English knowing person or student can write a letter. But the student, the person who writes a letter with a good vocabulary, grammatical clarity, and articulate language, that will be a good letter. The reader of your letter must appreciate the contents of your letter. The contents should be concise, compact, and correct. Nothing irrelevant. So always try to write a good letter. Now I will explain in Hindi. मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक अच्छा लेटर ऑर्डर प्लेस करने के लिए कैसे लिखा जाता है. सपोज आप एक किसी स्पोर्ट्स क्लब के हेड हैं और आपकी टीम क्रिकेट जोनल मैचेस में पार्टिसिपेट करने जा रही है. आपको कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स चाहिए. उन जोनल मैचेस के शुरू होने से पहले तो आप एक जो क्रिकेट गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको लिखते हैं. तो ये एक ऑफिशियल लेटर होगा जो कि फॉर्मल होगा नेचर में. तो वही आपको फॉर्मेट फॉलो करना है जो आप एक फॉर्मल लेटर में फॉलो करते हैं. जैसे सेल्फ एड्रेस इन 2 लाइन्स, यानी सेंडर्स एड्रेस 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर डेट लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर रिसीवर्स का डेजिग्नेशन जैसे मैनेजर, डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइक दिस एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट की कंप्लीट स्पेलिंग लिखिए SUBJECT और सब्जेक्ट को हमेशा नाउन से शुरू कीजिए. फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए, फिर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन के बाद आप लेटर लिखना शुरू कर देंगे. लेटर की जो मेन बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसको 3 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कीजिए. जो फर्स्ट पैरा होगा वो इंट्रोडक्टरी इन नेचर, सेकंड में पैरा में मेन बॉडी, थर्ड में मेकिंग ए रिक्वेस्ट और मेकिंग एन इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स you require. Right? When that body is complete, then you will leave 1 line blank, polite leave taking, yours sincerely or truly. एक दोनों में से सिंसियरली या ट्रूली में से एक यूज कर लीजिए, फिर सिग्नेचर, फिर नेम. लेकिन ऐसे लेटर को लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, जिससे एक अच्छा लेटर लिखा जाएगा. वो पॉइंट्स हैं: डिवाइड द बॉडी ऑफ द लेटर इनटू 3 पैराग्राफ्स. 3 पैराग्राफ्स में लेटर की बॉडी को डिवाइड कर लीजिए. फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्टरी 1, ओपनिंग पैरा. उसमें क्या लिखेंगे? अप्रूवल ऑफ द रेट सेंट बाय द पार्टी. इस पार्टी ने आपको रेट भेजे हैं, उस पार्टी ने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्पोर्ट्स गुड्स की, और आपने वो रेट्स अप्रूव कर दिए हैं. अब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो प्लेस द ऑर्डर ऑफ द गुड्स आइटम्स यू रिक्वायर. और फिर जो आइटम्स आपको चाहिए तो उसके लिए एक बॉक्स बनाइए, उसमें 4 कॉलम्स बनाइए. पहला सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, ब्रांड और क्वांटिटी.
जो second para है, main body of the letter, make clear to the sender of the goods that nothing below the mentioned specifications will be acceptable. ये बहुत जरूरी है. वो अपनी मर्जी से कोई सामान भेज दो जो आपको पसंद नहीं है, फिर आप वापस करेंगे, टाइम वेस्ट होगा. पहले ही आपको क्लियर कर देना है कि कौन से ब्रांड का कौन सी चीज, कैसे रैपिंग होनी चाहिए उसकी, कैसे उसको डिस्पैच करेंगे, वो सब मेंशन कीजिए आप सेकंड पैरा. थर्ड पैरा, make request for delivery of goods within the stipulated time, before the commencement of that zonal matches. So you want to take the delivery of these items. Write clear and articulate language using a good vocabulary. Very important. Good vocabulary is a must. Okay. Clear and articulate language, well-connected sentences. Then the last point, maintain a grammatical clarity and follow correct punctuation. Punctuation should be correct. Where you have to put comma, where you have to put full stop, where you have to take capital letter. So, if you keep these things in your mind at the time of writing such a letter, the structure of that letter will be very good. Because I keep telling my students letter writing is an art. You should develop this art in you. वो कैसे डेवलप होगी? एक अच्छी लैंग्वेज लिखना सीखिए, एक अच्छी वोकैबुलरी और करेक्ट ग्रामर, तो एक अच्छा लेटर लिख पाएंगे. आप अपने लेटर से जो रीडर है और जो एग्जामिनर है उसको इम्प्रेस कीजिए. तो इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए, आप एक अच्छा लेटर लिख पाएंगे. Here is an example of a letter for placing an order for the supply of some sports items. This is an official letter in nature, so you will have to follow the same format which you follow in case of a formal letter. That is, self-address in 2 lines, leave 1 line blank, put date, then 1 line blank, put receiver's designation and address, 1 line blank, then put subject. So you will have to start writing this subject with a noun. In this case, an order for the supply of sports goods. Order is your noun. And then leave 1 line blank, put salutation. Sir, we appreciate the promptness with which you have replied to our letter requesting you to quote the rates of some sports items required by us. Yani you wrote a letter previous to this one to this company requesting them to send you the rates of some of the sports items which you require. That company quoted the rates immediately after you have received those rates. You decide to write a letter to that company for the supply of some sports items needed by you. So you will start writing the letter in this manner. How? You will start writing the first para of such a letter. We appreciate the promptness with which you have replied to our letter requesting you to quote the rates of some sports items required by us. We find the quoted rates
terms and conditions reasonable, we are now pleased to place an order for the purchase of the following sports goods. Now you will make a box, ठीक है, there should be 4 columns. First, serial number 1, 2, 3 like this, name of item, then brand, and then quantity. First, cricket bats, brand SS, quantity 10 pieces. PCS means PC. Second, cricket balls, brand Willie, quantity 10 pieces. Sorry, 24 pieces. Third, batting pads, Dura is the brand, quantity 12 pieces. So you will mention all the items, names of all the items you require, and you will have to make a box somewhere in the center, not exactly from here, right? Somewhere in the center of that letter. The first para is complete. You will now start writing the second para. We are also sending here with a demand draft of rupees 10,000. You write 10,000 in words also as an advance money as required by you. Please note that all the above items must conform to the specified brands. Only they should be in perfect shape and condition with no scratches of any sort either. The goods not in agreement or conformity. Conformity is another synonym of agreement with the specified brands and of poor or inferior. Inferior is another synonym of poor. You can use one of these two. Quality will be returned immediately at your own risks and consequences. All the items must be wrapped and dispatched with utmost care. This is very important to write, because the sender of these items will take care at the time of sending these items. Because it will be in his mind that the party will return an item or other items, which are found of poor quality, will be returned immediately. If any damage occurs during transit, then the party who is sending will be responsible for that damage. The receiver of the goods will not be responsible for any damage of any kind during transit. So these 2 or 3 points are very important to mention, that you will be very particular about the quality of the items you need. Now, the second para is complete. Now you will start writing the third para. You are requested to send all the items at the earliest, as the zonal cricket matches are quite near at hand. Please acknowledge our letter and inform us the moment you dispatch our goods so that we could take its delivery in time. So this will be your third para, last para. Now leave one line blank. Take polite leave taking. Yours sincerely or truly. You can use either sincerely or truly. Signature and name. This is the way you will write a letter for placing an order of goods. If you follow
this kind of language, you will be able to write a very good letter. Dear students, यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स खरीदने के लिए. ये एक ऑफिशियल लेटर ही होगा जो कि एक फॉर्मल लेटर के रूप में लिखा जाएगा. इसका फॉर्मेट वही होगा जो आप फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं. पहले सेल्फ एड्रेस यानी सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे SUBJECT. इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे SUB, जो काफ़ी स्टूडेंट्स लिखते हैं वो गलत है. एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स. अब ये देखिए कि ऑर्डर क्या है, नाउन है. उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल है एन, राइट. तो हमेशा मैं ये बताता रहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है लेटर का वो नाउन से शुरू होना चाहिए. फिर एक लाइन छोड़िए, सैल्यूटेशन लिखिए. फिर सैल्यूटेशन के नीचे से आप एड्रेस का जो फर्स्ट पैरा है, इंट्रोडक्टरी पैरा, वो लिखना शुरू करेंगे. ओपनिंग पैरा कैसे? We appreciate the promptness with which you have replied to our letter requesting you to quote the rates of some sports items required by us. इस सेंटेंस से ये मालूम होता है कि आपने पहले एक लेटर लिखा था इस कंपनी को कुछ स्पोर्ट्स आइटम्स के रेट जानने के लिए, और उस कंपनी ने आपको तुरंत रेट्स भेजे जिसकी आप प्रशंसा करते हैं कि आपने बहुत जल्दी हमारे रेट्स भेजे जो हम जानना चाहते थे, और अब हम एक ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं. आपके रेट्स बिल्कुल ठीक हैं. सेकंड सेंटेंस, वी फाइंड द कोटेड रेट्स टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल. यू कैन टेक क्वाइट एडवर्ब बिफोर दिस रीजनेबल, क्वाइट रीजनेबल. We are now pleased to place an order for the purchase of the following sports goods. अब हम जो नीचे लिखेगा कुछ स्पोर्ट्स गुड्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. और उसको जो आपको आइटम्स चाहिए, स्पोर्ट्स आइटम्स चाहिए या कोई भी आइटम्स, जब आप एक प्लेसिंग लिखते हैं किसी ऑर्डर की को प्लेस करते हैं सामान खरीदने के लिए, तो एक बॉक्स बनाइए. बॉक्स में 4 कॉलम्स, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, ब्रांड, क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल 1 क्रिकेट बैट्स, ब्रांड SS, 10 पीसेस. PCS शॉर्ट फॉर्म है पीसेस की. सेकंड क्रिकेट बॉल्स, विलेज, 24 पीसेस. थर्ड बैटिंग पैड्स, ड्यूरा, ब्रांड है, 12 पीसेस. इस तरीके से आप जो रिक्वायरमेंट है आइटम्स की वो आप बॉक्स में लिखेंगे. बॉक्स आप सेंटर में बना सकते हैं लेटर के लिए. इस तरीके से आप एक लेटर लिखना शुरू करेंगे. ये ओपनिंग पैरा आपने कंप्लीट कर दिया. इस तरीके से फर्स्ट पैरा पूरा हो गया. अब आप सेकंड पैरा लिखना शुरू करेंगे. वी आर ऑल्सो सेंडिंग हियर विद अ डिमांड ड्राफ्ट और ₹10,000. फिर इसी को वर्ड्स में लिखिए 10,000 को एज एन एडवांस मनी एज रिक्वायर्ड बाय यू. जैसा आपने कहा था अपने लेटर में कि भाई 10,000 का एडवांस मनी भेजिए, तो वो हम डिमांड ड्राफ्ट भेज रहे हैं. प्लीज नोट दैट ऑल द अबव आइटम्स मस्ट कन्फर्म टू द स्पेसिफाइड ब्रांड्स ओनली. जो जितने भी आइटम्स हैं, जो ब्रांड्स हमने लिखे हैं वही होने चाहिए, दूसरे ब्रांड्स के एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. They should be in perfect shape and condition with no scratches of any sort either. ये परफेक्ट शेप में होंगे, परफेक्ट कंडीशन में होंगे, किसी प्रकार की कोई स्क्रैचेस वगैरह कहीं भी नहीं होने चाहिए. The goods not in agreement
or conformity. Conformity is another synonym of agreement with the specified brands and of poor or inferior quality. Inferior is another synonym of this poor quality will be returned immediately at your own risks and consequences. Very important to write. क्योंकि आपने बता दिया है जो आपको गुड्स भेजेगा कि आप जो जिस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए उससे नीचे की जो क्वालिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और कोई भी इंफीरियर या पुअर क्वालिटी का गुड्स होगा वो आप तुरंत उसको वापस भेज देंगे। इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होगी जो भेज रहे हैं इस सामान को, क्योंकि ट्रांजिट में कहीं भी कोई डैमेज होती है तो उसके वही जिम्मेदार है। ऑल द आइटम्स मस्ट बी रैप्ड एंड डिस्पैच्ड विद अटमोस्ट केयर। जो भी सारे आइटम्स हैं उनको पूरी अच्छी तरीके से रैप करेंगे और डिस्पैच करेंगे। इस तरीके से आपने सेकंड पैरा भी पूरा कर दिया। अब एक लाइन छोड़ेंगे, थर्ड पैरा शुरू करेंगे। You are requested to send all the items at the earliest as the zonal cricket matches are quite near at hand. ये आप जल्दी से जल्दी भेजेंगे क्योंकि जोनल जो क्रिकेट मैचेस हैं वो काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। Please acknowledge our letter and inform us the moment you dispatch our goods so that we could take its delivery in time. और हमारे लेटर को एक्नॉलेज कीजिए कि वो आपको मिल गया है, और जैसे ही आप डिस्पैच करें इस सामान को आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, जिससे कि हम उस गुड्स की, इस सामान की जो डिलीवरी है वो समय पर ले सकें। ये आपका थर्ड पैरा भी हो गया। अब एक लाइन छोड़िए, फिर पोलाइट लीव टेकिंग, योर्स सिंसियरली और ट्रूली दोनों में से एक यूज कर लीजिए, फिर सिग्नेचर एंड नेम। इस तरीके से एक लेटर ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिखा जाता है। अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे, लैंग्वेज यूज करेंगे और जो सिनोनिम्स हैं या अदर अल्टरनेटिव वर्ड है जो उसकी स्थान पर यूज हो सकता है, जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए और गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए। Dear students, I hope you must have found this video beneficial. If yes, like and share it. Please don't forget to hit the button subscribe. Make sure that you press the bell icon on all so that you could never miss an update.